Good morning, everybody. Kindly show your presence so that we can start the class. I'm Dr. Mukesh Pareek and I'm live. Good morning. Good morning, Kundan. Shatrupa Mukherjee, good morning. Karthik Kayan, good morning. Dipendra Chanji, good morning. Good morning, everybody. So, write down today's topic. It is new historicism. Okay, new historicism. Write down new historicism. Now, in literary criticism, yesterday we were studying and we were trying to update our knowledge regarding formalism, or we say Russian formalism. Clear? And I told you that Russian formalism is too much, a kind of very much akin to or equivalent to new criticism, or say practical criticism. Clear? Because in new criticism they consider that the text is autotelic. Clear? And in formalism they also consider that text is an organic whole, and it is a kind of device and can be studied scientifically. Clear? So yesterday we tried to understand that how, with the starting of the 20th century, criticism moved away from biography, psychology, and the cultural and historical effects on the writer. Okay, but you will be surprised to know that why I have chosen new historicism, instead of structuralism, post-structuralism, or the other fields of literary criticism. The reason lies behind the fact that it is exactly opposite what we study in new criticism or in formalism. समझ में आ रही मेरी बात कि कल हमने फॉर्मलिज्म में जो कुछ पढ़ा, फॉर्मलिज्म it stresses that a text is autotelic, it is a device, and it can easily be text can easily be understood if we understand the inherent workings of the words used by the writer. Okay, बट न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है बिल्कुल अलग चीज है. सबसे पहले तो आप एक राइटर का नाम लिखिए, दैट न्यू हिस्टोरिसिज्म, as such the name suggests to us that new historicism mean to say again the critics want to study the history of the text, okay, or the cultural background of the writer or critic. I'm so sorry for my cough. Are you writing? Because I know that all the unwanted people who were not students of literature have already been unfriended by me. So there are only students who are keen to watch me. They are watching me right now. Kindly write yes that you have attended the class now and you have opened your notebooks and you really want to know what I want to convey. Manjusha Kaushik, you were not there yesterday. I think you were absent in the class. Yesterday, I was actually a bit angry with maximum number of students, and I said that I won't be, though I removed it from that video, I removed it from Facebook, but I uploaded it on YouTube because of the request of many students. Clear? So you must have watched it again, and those who missed yesterday's lecture can watch it on the YouTube. Because now we would be doing one thing, that we would keep that video for 1 or 2 days on the YouTube, then we will either lock it or we will remove it. Okay? चलिए, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म का आप फटाफट से लिख लीजिए, व्हाट इज न्यू हिस्टोरिसिज्म. मैं पॉइंट बनाता जाऊंगा. ओके, राइट डाउन द फर्स्ट थिंग दैट, पहले मैं समझा देता हूं एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म. देखो, न्यू हिस्टोरिसिज्म में कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा. ठीक है? न्यू हिस्टोरिसिज्म है कि हिस्ट्री
plays a role. History plays a role in the formation of the text. इसको लिख लीजिए. इसको न्यू क्यों कहा गया? Because Stephen Greenblatt, लिखो Stephen Greenblatt. He was a student of Raymond Williams. Okay, Raymond Williams, you know that we can say that father of a kind of cultural studies, or say he was a Marxist in England, and Stephen Greenblatt is an American. ठीक है. और ये जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है, ये उस समय के स्टूडेंट्स थे जब न्यू क्रिटिसिज्म वाज वेरी मच पॉपुलर. एंड एज यू ऑल नो दैट फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, all the teachers used to teach that text is more important, and to analyze the text, to understand the text, to understand the meaning of the text, there is no need to go outside the text. Clear? There is no need to go beyond text. There is no need to understand in detail the history of the writer, the biography, the biographical details of a writer, his cultural background, or you know the scientific, or say, I'm so sorry, political conditions of that particular period when that text was written. All these things are unimportant. These things were said by new critics. And Stephen Greenblatt, आप नाम लिख पा रहे हैं? Should I speak the spelling? Stephen, as you all know. Pushpita, good morning. I'm so sorry. Stephen, S-T-E-P-H-E-N, Stephen Greenblatt, G-R-E-E-N-B-L-A-T-T, Greenblatt. आपको नाम याद रखना है, ठीक है? This lecture is going to be a lengthy one because in live class it happens, because I'm not delivering only a lecture, I will be waiting for your responses also. Okay? चलिए, तो मैंने एक बार एक बेसिक समझा दिया है. पहले बताइए सबको बेसिक समझ में आ गया कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इज एक्चुअली, यू नो, इट स्टार्टेड इन exactly 1980s, a time when post-structuralism was was very much popular. Structuralism was very much popular, you know, in the departments of English and everywhere. Okay, एक तो बेसिक चीज ये समझ लीजिए. दूसरी चीज है कि when देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दो was discussed, was written by the literary critics, but it was not popular. 1980s तक में भी इंग्लैंड में, अमेरिका में ज्यादातर न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी होती थी. ओके, दैट के टेक्स्ट जो है ऑटोटेलिक है, टेक्स्ट ऑर्गेनिक होल है, टेक्स्ट में ही सारी चीजें हैं, पैराडॉक्सेस आर देयर, और उसको एक वर्बल आइकन माना जाता था. वर्बल आइकन आपको मालूम है, एक बुक है तो वो बुक का नाम रखा ही इसलिए गया है so that you people can understand that, you know, a poem is actually क्या बोलते हैं उसको, a kind of, you know, an urn. Everything is there in the poem. Okay, verbal icon, that is, the sign is everywhere. Whatever symbolism you want to study, that was there, you know, and this was studied under formalism and new criticism. Okay, and in that, history was not considered. History of the writer and the cultural backgrounds of the writer, political backgrounds of the writer, you know, all these things were not considered important. Okay, but then as I told you, that Stephen Greenblatt, he himself was the student of Raymond Williams. Okay, but ऐसा हुआ कि गुरु से हट करके और जो शिष्य है, he got influenced by the writings of Michel Foucault. अब मिशेल फूको का नाम तो आप सबने मेरे लेक्चर्स में सुना हुआ है. मिशेल फूको, F-A-U-C-A-U-L-T, Foucault. Michel Foucault, French writer who wrote about sexuality, who wrote about discipline, who wrote about power, who gave us the term episteme. I think you are aware about Foucault. So एक बहुत बेसिक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, that Stephen Greenblatt though was trained to become a new critic. Okay, वो न्यू क्रिटिसिज्म के हिसाब से उनको ट्रेन किया जा रहा था, but all of a sudden his separate studies were side by side studying. कई बार क्या होता है, जैसे टीचर है, आपको कुछ पढ़ा रहा है, आप टीचर से सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी sometimes, you know, you have your own mind and you're studying something, you know, separately. And the same thing happened with Stephen Greenblatt as well. What he did, though he was being taught in the classroom that, you know, poem is important, everything is the meaning of the poem lies in the poem itself, and there is nothing to do with the biography of the writer, psychology of the writer, cultural background, political history of the times of the writer. Clear? But he was not satisfied, and somehow he was studying separately, and he came up with the conclusion that no, text is always a kind of document which is a subtext.
एक और नया पॉइंट लिखिए, ही केम अप विद एन आइडिया। क्योंकि देखो जब आप स्टडी करते हो ना किसी चीज की, जैसे आई वॉज ऑल्सो अमंग दोज स्टूडेंट्स इन माई यूनिवर्सिटी टाइम, जब मैं टीचर्स की बात को उतना ही मानता था जितना मुझे मानना चाहिए, ठीक है, मैं टीचर्स की सारी बात नहीं मानता था। मैं चाय की चुस्कियां भी लूंगा आज, आपको चाय पीनी है तो आप यू आर मोस्ट इन्वाइटेड। बिकॉज मुझे अभी भी खांसी है। चलिए रिलैक्स होकर के लेक्चर सुन रहे हो ना? पहले बताओ कुछ कुछ समझ में आने लगा? स्टीफन ग्रीनब्लैट के बारे में बता रहा हूं कि स्टीफन ग्रीनब्लैट जो है वो एक अलग तरह के स्टूडेंट थे, दो ही वाज ट्रेन्ड टू बी a new critic or a formalist, but side by side he was also studying, and he was a student of Raymond Williams, who was a central force of cultural materialism, and he was a Marxist. Okay, और आपको मालूम है कि मार्क्सिस्ट जो है वो क्या करते हैं? मैं अपने तरीके से ये लेक्चर दे रहा हूं। मार्क्सिस्ट क्या करते हैं बताओ? मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट मानते हैं। दे रियली कंसिडर दैट हिस्ट्री इज समथिंग, ओके, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं ना कि दैट हिस्ट्री में जो स्ट्रगल है उसने क्लास कॉन्शियसनेस को जन्म दिया, और बूर्जुआ और प्रोलेटरिएट दो क्लासेस को जन्म दिया। इट मीन्स अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो यू शुड बी अवेयर दैट मार्क्सिस्ट समहाउ दे आर स्ट्रक्चरलिस्ट। ये आपको आपको लिख लो इसको पॉइंट को, दैट ऑल मार्क्सिस्ट्स आर अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट्स, बिकॉज दे समहाउ believe in the structures of society, structures of history, and they really consider history. लेकिन what is मेरी हेल्थ ठीक है, मुझे खांसी जल्दी से नहीं जाती है, केजरीवाल की तरह मेरी खांसी लंबी चलती है। केजरीवाल की खांसी तो खत्म हो गई है अब। चलिए, मेरे बालों को बिल्कुल मत देखना, मैं बिल्कुल भी कटिंग कराने नहीं जा रहा हूं सैलून में, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है बाहर कोरोना से, बिकॉज कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, आपको मालूम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड बी सेफ फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरी गंदी शक्ल और इन सब पे मत जाओ, मेरी खांसी पे, केवल लेक्चर अटेंड करो। मैं क्या इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी बताओ मैंने कौन सा नया पॉइंट छेड़ दिया कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, ओके। और ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, जैसे कि मैंने बताया कि इट स्टार्टेड इन 1980s, एंड 1980s वाज द टाइम ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ओके। सो समहाउ in the departments of English, in the department of sociology, in the departments of political science and philosophy, something of Foucault, Derrida, okay, Raymond Williams, these writers were discussed. Okay, and what they used to study that because postmodernism आ गया था, और postmodernism होता क्या है? postmodernism कुछ भी नहीं होता है। postmodernism के अंदर they simply consider that history is not a truth। लिख लो, postmodernists believe that history is not truth। जबकि modernist क्या होते हैं? modernists believe करते हैं that there is a structure, there is a truth, there is an enlightenment। these are basic things। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरे जितना पढ़ लिख जाओगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे। मैं कल काफी देर रात को पढ़ रहा था आपके लिए रेजोनेंस एंड वंडर, जो ऐसे है स्टीफन ग्रीनब्लैट का, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ नेट में। सो आई वाज रीडिंग इट, और इफ यू रिमेंबर आई सेंट दिस essay, a part of this essay on the group also, if you remember। कितने स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कल रात को रेजोनेंस एंड वंडर नाम का ऐसे आपको सेंड किया था? यस करके बताओ, तो पता चलेगा ना, पढ़ने वाले बच्चे मेरे को सुन रहे हैं इस वक्त। चलिए, ये बेसिक कुछ भूमिका बांधी मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टीफन ग्रीनब्लैट ने न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म दिया। इसको न्यू हिस्टोरिसिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि देयर वाज अ फैशन not to look at the history and the biography of the writer, okay, when you are culling out, when you are taking out, extracting the meaning of a text, or trying to understand the meaning of a text, clear? But all of a sudden this writer said that no, history is equally important, okay। अब यहाँ पे हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आपको पूछेंगे, बिकॉज कितना डिटेल में आप लोगों ने स्टडी किया उसका पता ऐसे चल जाता है, बिकॉज दे आस्क यू समटाइम्स वेरी टफ क्वेश्चंस। अच्छा चलो बताओ कि हिस्ट्री क्या है? चलो मुझे बताओ, what is history? What is history for a modernist? What is history for a structuralist? What is history for a post-structuralist or history for a postmodernist? चलिए मुझे बताइए, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं रिलैक्स में चाय भी पीता जाऊंगा, बताओ। हिस्ट्री क्या है?
अब आपको लगेगा कि हिस्ट्री इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, है ना, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिए है कि हिस्ट्री जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट तो मानते हैं कि यार देयर इज अ ट्रूथ, देयर इज अ फैक्ट इन इट, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि दे डोंट बिलीव इन द वर्ड। उनका ऐसा मानना है कि वर्ड डज नॉट गिव अस एनी मीनिंग, है ना। तो जब वर्ड कोई मीनिंग ही नहीं देता है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जब हिस्ट्री को स्टडी करेगा तो वो यही सोचेगा ना कि हिस्ट्री इज ऑल्सो, ये अब अपने बच्चों वाले आंसर अपने पास रखो, ओके, स्टडी ऑफ पास्ट एंड, और इसको साइड में रख दो, बिकॉज नाउ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म गोइंग टू बी प्रोफेसर्स। चलो अब सुनो, पहले आप लिखना बंद कर दो, मेरी बात का जवाब दो। ये जो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं ये छोटी छोटी क्लास के स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं, क्योंकि अगर हम जरा भी एमए करके आए हैं, हमारे को अगर क्लासरूम्स में प्रोफेसर्स ने कुछ डिस्कशन किया है, देन वी कम टू नो दैट हिस्ट्री इज अ पैलिम्पसेस्ट। लिखिए, एक टर्म लिखिए, हिस्ट्री इज पैलिम्पसेस्ट। ये छोटे बच्चों का आंसर है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एंड ऑल, ये बच्चों का आंसर है। आप लिटरेरी क्रिटिक्स के तौर पे पढ़ रहे हो, एंड योर आंसर शुड बी दैट हिस्ट्री इज डिस्टॉर्टेड। नंबर वन, हिस्ट्री इज रिटन बाय द पीपल हु हैव पावर इन देयर हैंड्स, है ना। आपको मालूम होना चाहिए ये सारी बातें, कि अगर मान लीजिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ब्राह्मण होते इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारी को अलग तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जाती। आपको याद है ये जो पद्मावत एक मूवी आई थी, पद्मावत, एक पद्मावती या पद्मावत, यस लिख के बताओ, मालूम है क्या? देयर कम्स अ सीन इन दैट मूवी कि खिलजी है, वो चित्तौड़गढ़ के किले के सामने पड़ाव डाल के बैठा है एंड इज स्टीयरिंग द बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड पुटिंग देम इन फायर। आपको पता हो ये सीन याद है कि नहीं है? इज स्टीयरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड पुटिंग देम इन फायर, वो जो बॉन फायर जल रही है, और वो कह रहा है कि बिकॉज आई हैव द पावर नाउ एंड आई विल मेक द राइटर्स राइट हिस्ट्री फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता होना चाहिए, इफ एनीबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज हिस्ट्री, देन वी आर लिविंग इन अ फैक्ट। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें मालूम है कि हिस्ट्री जिसके हाथ में पावर होती है वो हिस्ट्री को लिखवा देता है। हाँ ना, मैं जवाब दो, इज इट अ फैक्ट और नॉट? सो पैलिम्पसेस्ट, PALIMPSEST, पैलिम्पसेस्ट, पहले लिखो इसको, हिस्ट्री इज अ पैलिम्पसेस्ट। मेरे ख्याल से ये जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है, इट्स अ वेरी फेमस सेंटेंस। अब बताओ पैलिम्पसेस्ट क्या होता है? चलो बताओ, क्या पता पैलिम्पसेस्ट वर्ड पूछ लें आपसे। जब आपने कभी देखा है बारिश के दिनों में हम बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपने देखा कि बारिश के दिनों में जब बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक से कुछ लिखा जाता है, तो अगले दिन जब उसको साफ करते हैं तो समथिंग इज visible, whether you have erased it or not, something of the earlier day, or of the day before yesterday or yesterday, something is visible whether you remove it or not. Sorry, if you remove it, still it is visible. So आपको कई बार क्या होता है, बोर्ड को साफ कर देने पर भी there is something visible from days before yesterday, 2 days before yesterday, कुछ लिखा हुआ दिखता है। The history is the same thing, that you keep erasing. The new emperor comes, he erases the history, he makes the people write another history, and history after history. So history is nothing but a palimpsest, okay? Because this is not facts. This is always twisted, prejudiced, okay, and written from the point of view of someone who has power. पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? So new historicists believe that history is always interpretative. You interpret history. It's not a fact. Whatever is your history, whatever is your culture, whatever is informed, or the kind of information which is given to you, you are with that biased and judgmental attitude, you look at the facts. अब एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम पूछते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था महाभारत में, तो क्यों नहीं लोगों ने रोका? तो अब अगर उस टाइम में जाएंगे तो हमें पता चलेगा दैट वाइफ वाज अ प्रॉपर्टी। अब हम उस पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। आज भी आप लोकल एरियाज में जाइए, मालिक बोलते हैं हस्बैंड को। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि थार धणी न केद है,
माँ अपनी बेटी को बोल रही है कि तारा दणी न के दीजिए अब का तीज न कोनामा लेबा. सोचो, still, and husband, the word in English is also, related to the power. Husbandry, animal husbandry, someone who has the power over the body or the genitals of a particular, woman. उसको husband बोलते हैं. So, these words, even still, we are unable to change the words. तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज करवा रहा हूं ताकि आपको ये न्यू हिस्टोरिसिज्म समझ में आ जाए. पहले तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दैट ओके? अब मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखते जाओ. लिखो, ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस आस्क व्हाट हैपेंड. ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस क्या पूछते हैं? व्हाट हैपेंड, व्हाट डज द इवेंट टेल अस अबाउट हिस्ट्री. इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस. बट इन कंट्रास्ट न्यू हिस्टोरिसिस्ट्स आस्क हाउ हैज द इवेंट बीन इंटरप्रेटेड. How has the event been interpreted? So इसका मतलब इतना एक important चीज हो गई कि it is about the how in new historicism. It is not about what. ये question आ सकता है. So the first thing is that in new historicism, that new historicists resist the notion that history is a series of events that have a linear causal relationship. It means a new historicist does not believe, does not consider that history is linear or something causal. Causal means something happened because of certain causes, and they don't consider that event A gave event B, and then event B gave event C, and then event C happened, and from that eventual and causal points we are coming to this present. Okay, this is not the fact. New historicists believe that we cannot look at history objectively. History is not objective. History is always subjective, because whatever has come to us was always prepared by someone, and if someone prepared it, then his subjectivity always worked in that. Okay, it is not scientific, it is not objective, but can only interpret it according to our own time and culture. If you are living in a particular time, you will be commenting, you will interpret a particular event from that angle. Okay, so history is not objective, it is always subjective. Okay, next, new historicists believe that we are helplessly subjective interpreters of what we observe. You just take your case. If I ask you to be very, very objective, don't you think like it is totally impossible for us to become objective? Because wherever you are present, suppose you are present in my class, then you will always be judging me from your subjective points. For example, somebody can ask that why is wearing the same shirt he wore yesterday, without looking at the objective conditions of my health. Somebody can ask why is not using board. Okay, then that is your subjectivity. It means you will always add your comfort zone, your cultural background. Suppose you belong to a rich family, you will be asking me that I should use more props, I should be more say technology friendly, so that I would be more reachable, blah blah blah. Clear? So it is always subjective, it's not objective. Most important thing to remember is that it was developed in the 1980s, as I told you, through the works of Michel Foucault. Michel Foucault का मैं नाम बता चुका हूँ, MICHEL FOUCAULT. Foucault को हम लोग Foucault pronounce करते हैं. Okay, Michel Foucault's concept of power and episteme. Okay, ये मैं आपको already बता चुका हूँ. अगला point है, New historicists acknowledge that their own criticism is biased because their response comes, or it derives from, their historical position and ideology. Whatever ideology you have, suppose you have an ideology, you have a set of ideas, you have a certain set of rules, and then if you are a Muslim, you will be thinking from your thinking will be guided by the Quran. If you are a Hindu, your thinking will be guided from the Gita, or your cultural artifacts, or say religious scriptures, books, and your if somebody is secular, then that secular is also a taught one. It's not exactly a humanistic secularism, because somehow wherever we are born, wherever we are taught, wherever we are informed, our
And new historicists, they themselves say that, even a person who is a new historicist is also a biased one, because one cannot escape one's own historicity. We are always embedded in a particular history, whether it is a contemporary history. हमारे घरों में क्या बताया जाता है, हमें जो बताया जाता है, जो हमें स्कूल में बताया जाता है, घर में बताया जाता है. अब देखो ना, जिन लोगों को हम कट्टर बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर कोई आदमी कट्टर है, बायगॉट है, you know that whatever is being informed to him in the classroom, don't you think that is weaker than the narrative or the versions being taught to him in the household, whatever is his mother is telling. जैसे एक लड़की है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लड़कियों को बताते हैं कि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वालिटी. अच्छा, उस इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लड़की बाहर जाती है तो उसको मालूम है कि उसकी मदर विल टीच हर अनदर लेसन. शी विल टीच हर दैट नो, whatever is being taught in the classroom is half truth. Real truth is that you are not free. क्योंकि आप जब बाहर जाती हो तो आपको पता चल जाता है कि लड़कियां अभी भी उतनी एक इक्वालिटी से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. इट मीन्स वी ऑल आर एम्बेडेड इनटू आवर ओन हिस्ट्री. ओके, एक हिस्ट्री घर पे पढ़ाई जाती है. हिस्ट्री का जरूरी नहीं है इट्स ऑलवेज द रिटन वन. हिस्ट्री इन द सेंस लाइक योर फैमिली हिस्ट्री, द कास्टिज्म. एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया जाता है दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, ओके, एंड यू आर हायर than the certain other people. Don't you think it is not taught in this school and classroom? So this history is quite different than whatever is taught in the classroom. So we all have our own histories. The meaning of the text is fluid. Write down. They consider, new historicists consider, ये question आपको आया हुआ है, that what they consider text is written. क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, डिकंस्ट्रक्शनिज्म में, they consider that text is not a solid thing, a solid entity. It is all evanescent. The meaning are not embedded there, okay, because we cannot catch hold of the meaning because of the signifier and the signified. सभी बच्चों को ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से ही आया है. स्ट्रक्चरलिज्म में ऐसे कहा गया है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के अंदर एक आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होता है, ओके, और वो आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप मीनिंग होता है. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा ने स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले और ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो ऐसे है, इन एसेज में ही आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इफ इट इज आर्बिट्रेरी, ही पुट अ क्वेश्चन मार्क टू द थियरीज ऑफ सॉजर. ही सेड, he asked a question that अगर सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में जो संबंध है, अगर वो आर्बिट्रेरी है, अगर वो फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है मीनिंग इज ऑलवेज स्लिपरी. वी कैनॉट कैच होल्ड ऑफ मीनिंग इन अ टेक्स्ट. मीनिंग इज ऑलवेज outside somewhere the text, okay, it can be outside. लेकिन आपको मालूम है न्यू हिस्टोरिसिज्म से पहले क्या पढ़ाया जाता था न्यू क्रिटिसिज्म में और फॉर्मलिज्म में, कि टेक्स्ट इज देयर इन द टेक्स्ट, इट इज नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट. बट अब ये कह रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में दैट टेक्स्ट में मीनिंग नहीं है, इट इज फ्लूइड, इट इज स्लिपरी, देयर इज अ डिफरेंस, मीनिंग्स कीप स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स. क्लियर? डिफरेंस वर्ड किस किस को आता है? चलो जवाब दो. डिफरेंस, differ plus defer. This is a neologism given by Derrida. Differ का मतलब difference, that is the difference between the signifier and the signified, okay, and defer, D-E-F-A, defer means postpone, delay, कि हमारे हाथ में मीनिंग हमेशा डिले होता रहता है, हमारे हाथ में नहीं आता है. Those who are less aware about all these things, kindly go to my YouTube channel Mukesh Pareek Cosmos, and I have uploaded 4 videos of live classes on structuralism. परसों एग्जाम है आपका, एग्जाम से पहले उनको देख लीजिए. दे आर गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, ओके. सो मैं आज समझाने में लगा हुआ हूं कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि इवन अ क्रिटिक who belongs to new historicism, even his ideas, his statements are not perfect because he is also following a particular ideology. He has his own historicity, okay. And text, whatever they are following, are slippery in nature because they are writing under the say influence of postmodernism and post-structuralism. Artistic texts are products of culture and historical context. ऐसा मानना है न्यू हिस्टोरिसिस्ट्स का. जबकि आपको पता है न्यू क्रिटिक्स और फॉर्मलिस्ट क्या मानते हैं कि कल्चर से, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, बायोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है.
टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एक डिवाइस है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन दे आर गोइंग फार अवे फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट दे आर सेइंग दैट नो नो नो, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी बुक हमारे हाथ में है तो वो एक प्रोडक्ट है, वो एक किसी कल्चर का, किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मालूम है ये जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट है स्टीफन ग्रीनब्लैट, ये मिशेल फूको से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आपने मिशेल फूको की कोई बुक पढ़ी है? हैव यू एवर रेड एनी एसे और अ बुक ऑफ मिशेल फूको इन ओरिजिनल? आई विल वेट फॉर योर आंसर. I see many students are watching me seriously right now, and I deserve to ask this question because I'm a teacher of so-called, future professors. Have you read any article? Have you read any book? I'm not talking about summaries and all. I'm talking about anything which is original, written by Foucault or say Derrida. Should I have to wait for your answers? No. And that negativity persists, and the answer is no, and I'm going to get a Deepavali of no, 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 no. And I'm waiting for the light of yes. Here is someone, Rojana, then still there is one light among many no's. Okay. तो आपको कल मैंने एक ऐसे भेजा है स्टीफन ग्रीनब्लैट का, रेजोनेंस एंड वंडर. यू शुड रीड दैट ऐसे. क्लियर? आज आप उस ऐसे को पढ़ेंगे. एग्जाम सिर पर तो क्या हुआ, एग्जाम तो चलता ही रहेगा, एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा जब तक आप यू डोंट गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग ओरिजिनल, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट देयर. चलो, दैट्स गुड. No is good because there is honesty in that no. Okay, I can sense honesty. I can smell honesty. चलिए, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि जब आप फूको को पढ़ते हैं, why I asked this question actually, जब हम फूको को पढ़ते हैं तो he always starts his book or say essay, with an anecdote either or with say painting or a discussion about a painting or an artifact. दोबारा बताओ मैंने क्या बोला कि फूको ऑलरेडी, अच्छा, जब कोई आदमी थ्योरी नहीं दे रहा है and is talking about anecdote and practically applying something on something and then proving his point is actually called that he's using criticism in a practical way. So that way is a practical critic. Write down practical. That's why we have two different terms. One is literary criticism, okay, and another one is literary theory. So sometimes you will be surprised that when we read new historicism as such, we don't have theoretical aspects. We cannot, cull. We cannot extract certain points of theory. Okay, so that's why we say that these are only literary critics. Those who are studying something, and trying to prove their point, but they don't have certain points on which, we can apply certain things and then, we can prove something. So that is the great difference between literary theory and literary criticism. Okay? तो मैं बातचीत कर रहा था कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट जितने भी होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, जैसे शेक्सपियर ले लीजिए, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है that Stephen Greenblatt and most of all these new critics, they studied Renaissance, क्योंकि मिशेल फूको also studied Renaissance. उनका जो सारा स्टडी ऑफ रेनेसां एंड पर्टिकुलरली दिस फूको, दिस स्टीफन ग्रीनब्लैट, ही इज फेमस फॉर स्टडिंग एंड रीस्टडिंग शेक्सपियर एंड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. मैं अभी इसके बुक्स के नाम में बताऊंगा आपको आज. आर्टिस्टिक टेक्स्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स, सो दे कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री. जब ये मान रहे हैं कि एक कल्चर का प्रोडक्ट है कोई भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ओके, तो अगर वो कल्चर का प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को पढ़ करके वी कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट हिस्ट्री, इन विच दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज मेड, क्रिएटेड, फ्रेम्ड, फॉर्म्ड. है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Literature should be studied and interpreted within the context of both the history of the author and the history of the critic. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या खास बात है. तो खास बात क्या है कि ये जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, न्यू हिस्टोरिसिस्ट जितने भी हैं, they say that
history of the writer is equally important, okay, but you cannot avoid the history, the political circumstances, the cultural circumstances, okay, of a critic also, because a critic will ultimately make you available in the form of commentary a particular text. Okay, so जैसे I let me link it with the teacher. आपको नहीं लगता अगर एक टीचर है, जिस बैकग्राउंड से टीचर आएगा वो वही कि वो का वही बैकग्राउंड आपके दिमाग में भरने की कोशिश करेगा? ओके, सो बिकॉज टीचर इज ऑल्सो क्रिटिक, बिकॉज जब वो टेक्स्ट को समझाते हैं तो दे ऑल्सो इंक्लूड देयर इंटरप्रिटेशंस, और मोस्टली जितने भी क्रिटिक्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं टीचर्स थे मोस्टली. ओके, सो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस बिकम को टेक्स्ट. ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लिखो दैट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस जो होती हैं वो को टेक्स्ट बन जाती है. दैट टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट you can have a co-text, so that that history or cultural background, understanding of that can really help you to understand a particular text. जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है ट्वेल्थ नाइट, तो ट्वेल्थ नाइट में जेंडर को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, शेक्सपियर ने दिखाया है. तो समथिंग some story, some incidents happened in that time, and Stephen Greenblatt related to us that certain things happened there, and because of that, yes, Aditi Bose, that it is related to death of an author. No, that is a different phenomenon. That means reader response theory. Death of an author का मतलब होता है कि हमारे हाथ में जो आ गया, हम उसको ऑथर क्या कहना चाह रहा है, अब ऑथर इज डेड, ओके, एंड व्हेन अ रीडर रीड्स अ टेक्स्ट ही हिमसेल्फ बिकम्स द ऑथर. ओके, बट अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि देयर कैन बी अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्रिटिक, ऑफ द रीडर, ओके, that also becomes an important. I can understand why you asked this question. You somehow wants to link that author is dead, okay, but you should remember that somehow certain things can be added somewhere, but that aspect is totally different. That takes us to different symbolism, क्योंकि आपको मालूम है कि रोनाल्ड बार्थीज ने ये ऐसे लिखा था, और उन्होंने इसको लिखते वक्त इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज की बात की थी. क्लियर? तो मैं इस पॉइंट को भी टच नहीं कर सकता. दैट इज टोटली रिलेटेड टू अन इन बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. अभी आ जाते हैं कोटेक्स्ट के. हिस्ट्री एंड कल्चर बिकम्स कोटेक्स्ट. सो न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट्स न्यू क्रिटिसिज्म. ओके, क्योंकि न्यू क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक आर्टिफैक्ट. वो कहते हैं कि ऑटोटेलिक है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन ये कहते हैं कि टेक्स्ट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. एंड लिबरल ह्यूमनिज्म, ये लिबरल ह्यूमनिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं. अब पूछोगे कि लिबरल ह्यूमनिज्म क्या होता है, तो लिखो दैट लिबरल ह्यूमनिज्म कहते हैं दैट टेक्स्ट हैज टाइमलेस सिग्निफिकेंस. लिबरल ह्यूमनिस्ट क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट तो साहब सिर पे लगा के उसको पूजा करो, टेक्स्ट तो हमेशा एक जैसा रहता है. बट ये कहते हैं कि नो वे, text is always subjective, it cannot be read objectively. So ये आ गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट, दैट बिकॉज टेक्स्ट में जो मीनिंग है, दैट मीनिंग कैन बी डिकंस्ट्रक्टेड, दैट कैन बी डिसमेंटल्ड, दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. यहां पर अदिति बोस का पॉइंट आ जाएगा, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा, दैट टेक्स्ट में वट एवर द ऑथर हैज रिटन, दैट इज नथिंग टू डू विद मी, व्हाट आई अंडरस्टैंड. ओके, लेकिन यहां पर तुम्हें एक बात और समझनी है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज नॉट एंटाइटल्ड विद द रिक्वायर्ड माइंड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. जवाब दो मुझे. आप ये थोड़ी ना कह सकते हो, जैसे अभी आपको हम ट्रेनिंग नहीं दें, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ढंग से ना करवाई जाए, आप नेट का एग्जाम नहीं दो और आपको एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप तो उस कविता का कुछ भी मीनिंग समझा दोगे बच्चों को. तो ऐसे थोड़ी होता है. इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही होते हैं जिनको हम ये काम दे सकते हैं. एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू से दैट ऑथर इज डेड एंड आई एम द ऑथर नाउ. अच्छा, अब एक लुई मॉन्ट्रूज का नाम लिखिए. LOUIS, लुई मॉन्ट्रूज, MONTROSE. लुई मॉन्ट्रूज का रेफरेंस वंडर रेजोनेंस एंड वंडर ऐसे में स्टीफन ग्रीनब्लैट ने दिया है. देयर ही हैज सेड दिस, ये लाइन बोल रहा हूं, टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट. टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री भी एक टेक्स्ट है, एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हिस्ट्री घुसी हुई है. There is always a history. If you try to read text, by opening up different sites, then you can find history is present there. And if you read history or historical documents, wherever they are, they can be in the museums, okay, in any kind of, artifact. History is everywhere, okay. But if you keep history and keep opening up the sites, you can find a text there,
ओके, सो हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी रेड एज अ टेक्स्ट, एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और पोस्ट मॉडर्निज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो अगर आप टेक्स्ट मान रहे हो तो टेक्स्ट के अंदर तो मीनिंग होता ही नहीं है। इसका मतलब है नीदर देयर इज अ मीनिंग इन हिस्ट्री नॉर देयर इज अ मीनिंग इन टेक्स्ट, इट इज बिल्ट अप, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन। तो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं आप कितने इन्फॉर्म्ड है। अच्छा, मुझे कुछ बात कहनी है ये समझाने के लिए, ताकि अदिति बोस ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, समहाउ उन्होंने अपना एक बहुत इंटेलिजेंट माइंड यहां पर यूज किया और मुझे ये बताने के लिए कि भाई क्या हम इसको डेथ ऑफ द ऑथर कह सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये जो हाईली इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, दे थिंक डिफरेंटली एंड रियलिटी इज डिफरेंट फॉर देम। ओके, जैसे वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन्ड दैट देयर इज ऑल अराउंड डिसइंटीग्रेशन ऐसा वर्जीनिया वुल्फ ने कहा। देन डोंट यू थिंक लाइक द सेम कंडीशंस वर नॉट सेम फॉर द सर्वेंट्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? अरे भाई, आप और हम जिस तरह से वर्ल्ड को देख रहे हैं, क्या बहुत गरीब आदमी भी देख रहा है? गरीब आदमी के लिए ट्रूथ इज अगेन ट्रूथ, ओके, फॉर हिम हिस्ट्री इज हिस्ट्री। तभी मैंने कहा कि छोटे बच्चों की तरह जवाब मत दो, दिस लेक्चर कैन नॉट बी गिवन टू इन अ स्कूल लेवल। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अब लोग होते हैं अलग अलग, okay, those people who are living in a very simple life, those who are not intellectuals, for them history is still history, okay, there is no fragmentation, they are still living, God is God for them, God is not dead as for niche, सोचने की जरूरत है। ओके, सो ये जो लुई मॉन्ट्रूज का जो लाइन है, वो जो मैं बोल रहा था, वो है टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट। ये लाइन बहुत फेमस है, ये लुई मॉन्ट्रूज ने दी है, और ही वॉज ऑल्सो अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट। अगला पॉइंट लिखेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट्स मैनी ऑफ द अजम्पशंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये एक जरूरी है आपको समझना, बिकॉज कम टाइम में मुझे बहुत कुछ समझाना होता है कि जरूरी नहीं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के सारे पॉइंट्स रिजेक्ट करता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। ओके, कुछ अजम्पशंस वो लेके चलता है, कुछ अजम्पशंस को वो रिजेक्ट कर देता है, बट इट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो ये आपको लिख लेना है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म काफी हद तक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, बट नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इन एवरी सेंस। ओके, इन वन थिंग दैट इट रिजेक्ट्स द एसेंशियल आइडिया ऑफ अ कॉमन ह्यूमन नेचर, क्योंकि आपको मालूम है कि आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ा जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है, दैट वी डोंट हैव अ यूनिफाइड आइडेंटिटी, ह्यूमन बीइंग इज नॉट द सेम, ओके, दैट इज शेयर्ड बाय द ऑथर, कैरेक्टर्स एंड रीडर्स, एवरीबडी इज नॉट सेम। ओके, this new historicists say, okay, instead it believes that identity is plural and hybrid. So ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब टेक्स्ट में बहुत सारे मीनिंग्स हैं, then body is also a text, okay, so your sexuality, तो history of sexuality जो मिशेल फूको ने लिखा है, so as I told you that स्टीफन ग्रीनब्लैट is highly influenced by मिशेल फूको, कि बॉडी भी आपकी जो है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लुई अल्थुसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। अब लुई अल्थुसर का आइडियोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है? ही वाज अ मार्क्सिस्ट, आप मेरा स्ट्रक्चरलिज्म पे देयर आर 4 लाइव वीडियोस आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, मैंने अभी तक लॉक नहीं किया है, 1 तारीख को एग्जाम के बाद वो सबको लॉक कर दूंगा, तो प्लीज उसको देख लीजिए। देयर आर, इफ यू आर न्यू एंड डोंट नो अबाउट माय यूट्यूब चैनल, देन मुकेश पारिक कॉस्मोस आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए, यू विल गेट माई चैनल ओवर देयर। उस पर लुई अल्थुसर का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी आपको पढ़ना है, जरूरी है। ओके, सो न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है वो लुई अल्थुसर के कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डेरिडाज आइडिया दैट अ टेक्स्ट इज एट वॉर विद इटसेल्फ। वो मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्स्ट का मीनिंग निकलता नहीं है, टेक्स्ट अपने आप को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट है वो बख्तिन्स डायलॉजिज्म से भी इन्फ्लुएंस्ड है, डायलॉजिज्म ऑफ बख्तिन। मिखाइल बख्तिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने कार्निवलिस्क नाम का जो टर्म दिया है, डायलॉजिज्म का जो टर्म दिया है, डायलॉजिज्म विच सेज दैट अ टेक्स्ट कंटेन्स अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस। लिखो, मिखाइल बख्तिन says that in dialogism a text contains a multiplicity of conflicting voices. So all these like whether Althusser, whether Derrida, whether Mikhail Bakhtin, these all writers and Michel Foucault, they have influenced the new historicism, okay, in one or the other way. Okay, Foucault's concept of power, knowledge and discourse, okay,
नेक्स्ट फूको सेज दैट पावर लाइक, अच्छा आपने पेनॉप्टिका का कॉन्सेप्ट सुना है क्या मेरे मुंह से? पेनॉप्टिका, यस और नो में जवाब दो ताकि मैं उसको समझा दूं अभी के अभी। पेनॉप्टिका, पेनॉप्टिका, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशेल फुको। पेनॉप्टिका समझना बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, पेनॉप्टिका का मतलब लिख लीजिए आप, सर्विलेंस, दैट यू आर बीइंग वॉच्ड फ्रॉम एवरीवेयर। Panoptica, P-A-N-O. Optica means to watch, pan means all. That everybody is watching you, and you, जैसे जितने भी कैमराज आजकल लगा दिए गए हैं, हर जगह कैमरा है। ओके, तो आपको नहीं लगता यू आर ऑलवेज अंडर सर्विलेंस? ओके, बिग बॉस, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बताइए, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू कौन से नॉवल का सेंटेंस है? जॉर्ज ऑरवेल का 1984 नॉवल का फेमस सेंटेंस है ये। ओके, बिग ब्रदर वॉचिंग यू। So panoptica is a concept given by Michel Foucault. He says that in a very subtle and hidden manner, power is being exercised on us. Okay, and we are under power. Always we are under power. We are always watched. Chaliye, let me give you one example, very simple example. Don't you think that there are satellites? There are satellites, by the powerful countries. And they can kill anybody by launching a rocket and all. No, it's not a cage, it's a glass cage, you can say, a kind of jail, a glass. Why I said that? Because suppose there is a room which is made up of glass, then whatever you are doing is watched by the other people, isn't it? Big boss name, big brother, big B. That big B, that word has come from George Orwell's novel 1984. Chaliye, Foucault's concept of power, like panoptica, surveillance state, defines what is truth, knowledge and normalcy. देखिए, फूको ने कहा है कि जो कुछ ट्रूथ आपको दिखता है, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट पोस्ट ट्रूथ? ये सब आपको जो वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब आपको मेरी याद आएगी। पोस्ट ट्रूथ। और न्यू ये जो एग्जाम 1 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद ऑल द क्लासेस विल बी सीज्ड ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. I will directly be entertaining the students who have taken admission in my institute, and I'll be teaching on either Google or say Zoom. I will not be coming up on this Facebook and all. Okay, and I was coming just because to help the other students, maximum number of students. Jeremy Bentham का modern prism invented by, wow, that's great, Shiva. Okay, तो पहले आप लिख लीजिए that whatever post truth का concept I asked you. How many of you are aware about post truth? लिख लीजिए post truth. You should be aware about post truth. That was, I think, the word of the year in the Advanced Learners Dictionary, Oxford Advanced Learners Dictionary in 2012, I think. I'm not sure. Okay, post-truth means to say we are living in a post-truth world right now. Truth is given to us in a very typical manner. Whatever we consider that it is truth is actually not truth. Okay, and lie is so presented to us that we consider it a truth. Okay, that is called post-truth, that we have moved away from truth. So whether it is truth or it is knowledge or it is normalcy, whatever we consider normal is actually not normal. Okay, from Foucault's point of view, if the power is always exercising but in a very hidden manner. Okay, New Historicism believes in the Foucauldian idea of the capillary mode of power. Capillary mode of power लिखो inverted comma में. Capillary action होता है ना, पानी धीरे धीरे से ऊपर जा रहा होता है, that power is being circulated around us everywhere. We are governed by certain hidden thread. Somebody is जैसे एक बात बताइए कि आप मॉल में चले गए, but you are not aware that some super capitalists sitting there in America, somehow they are doing that, which is being exercised there in a remotest or hinterland village of a particular country. अफ्रीका के जंगलों तक में whatever is happening is being the strings are pulled by somebody there in America. It means power is moving in the veins in a very hidden manner. Okay, we are living in that world these days. So capillary mode of power, we call it. So that's why it is very important to read Foucault, which, like Althusser's ideology, interpolates the lives and actions of the citizens. अच्छा, interpolate का मतलब किस किस को आता है? Marxism में I have already taught you interpolation.
कितने बच्चों को इंटरपोलेशन आता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इंटरपोलेशन? Interpolates, the word had already been asked in your net exam, and I am damn sure they can ask you this question again. Interpolate, INTEPELL, interpolate. लगता है मालूम नहीं है. देखिए, हेजेमनी आता है आपको? आर यू अवेयर अबाउट द टर्म हेजेमनी? I'll be waiting for your answers. Are you aware about the term hegemony, interpolation, or this capillary mode of power, this episteme, this post-truth, circulation of knowledge? Are you aware about these words? If you're not aware about these words, then I think you should consult these words today. The knowledge of these words are very important before you enter in the exam. देखिए, hegemony का मतलब क्या होता है? That a citizen is under power and he himself is exercising or doing something which ultimately makes someone his master. मतलब हमें पता ही नहीं चलता है. In a very hidden manner, we have subconsciously accepted power, accepted ideology. I hope you understand it. No, it's not given by Bhabha. I'm sorry, Salma Sultana. देखो, सुनो, दोबारा सुनो. हेजेमनी क्या होता है? हेजेमनी का या आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, संगीता बसु हैज गिवन अस द करेक्ट आंसर. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. पहले आप एक प्रॉमिस करो आप लोग कि आप लोग आज मेरे लाइव लेक्चर्स जो है मार्क्सिज्म के ऊपर, यू आर गोइंग टू वॉच देम. यू आर गोइंग टू वॉच देम ऑन माय यूट्यूब चैनल. Okay, with patience you have to listen to every single word I'm teaching there. Otherwise you will miss something there in this exam. Ideological state apparatus, or say the concept of hegemony given by Antonio Gramsci. मेरा ग्रैमची के ऊपर भी एक बाकायदा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, बहुत छोटा सा वीडियो. डोंट वरी अबाउट दिस लॉन्ग लेंथी क्लास. ओके, एंड you need to clear your concepts if you really want to qualify next or JRF. देखिए, एक बहुत easy लैंग्वेज में समझा देता हूं. That a citizen starts unconsciously or subconsciously starts helping the masters, political masters whom they have already governed. Okay, so we are not aware about our own welfare, and we don't know that we have been exploited. Okay, but we start helping that master, that political master. That is called hegemony. Okay, hegemony means a kind of power which is being exercised on us, and silently, agreeably, because that political party, they create an ideology in such a manner that we consider that that is good for us, but actually that is not good for us. Hegemony is a manufactured consent. Yes, स्वाति मुझे हमेशा मदद करती है. Thank you so much, Swati. Because when I'm looking at this camera and teaching, many words vanish from my mind. That's why we all love offline classes. We teachers. मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट लिखो. मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट क्या होता है कि जैसे मैं झूठ मूठ में छोटे बच्चे को टॉफी दे करके और उससे कुछ भी गलत काम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? बताओ. यू जस्ट वी एक्सेप्ट द कंट्रोल. सलमा सुल्ताना, दैट एक छोटा बच्चा, उसको टॉफी दे दो और उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको मिसयूज किया जा सकता है. तो दैट इज कॉल्ड हेजेमनी. Okay, that is called state ideological state apparatus. कि उनकी आइडियोलॉजी होती है, बट आइडियोलॉजी हैज बीन टेकन एज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस. एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, हमें पता ही नहीं है कि ये एक हमको लगता है दैट इज आवर आइडियोलॉजी, बट दैट इज अ काइंड ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस. ये एंजल का दिया हुआ टर्म है. मार्क्स के साथ में जो एक देयर वाज अ पर्सन, द को ऑथर ऑफ मार्क्स, दैट वाज एंजल. ओके, so like Althusser's ideology interplays the lives and actions of the citizens. History has fissures. New historicists, they consider that history is not a complete whole. It has fissures. Fissures का मतलब क्या होता है बताओ? दरारें, gaps. It is a palimpsest, जो मैंने आपको एक नया टर्म दिया है आज. It is discontinuous. So if history is not a complete whole, then how can we believe history? Clear? And it is not a unified whole. So new historicists applies the post-structuralist idea that reality is constructed and multiple.
Your reality is different, my reality is different. So then for you, history can be different. For me, history can be different, because history cannot be a complete whole. Okay, it can be multiple. So now I'm talking about books, given by, written by this writer Stephen Greenblatt. Shakespearean negotiations, सॉरी, शेक्सपियरियन नेगोशिएशंस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. इसका सब टाइटल है द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी इन रेनेसां इंग्लैंड. शेक्सपियरियन नेगोशिएशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इट्स सब टाइटल इज द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी इन रेनेसां इंग्लैंड. ओके. सेकेंड वन, द स्वर्व, SWERVE, the swerve. Subtitle is How the World Became Modern. Its subtitle is How the World Became Modern. Third book, not third book, he co-founded the journal Interdisciplinary Studies के ऊपर जो journal था Representations. लिख लीजिए. Of late they have also started asking us the names of journals and all. Okay. Representations is a multidisciplinary journal. Okay. This textualized is not a correct word, Shiva. History is historicity of text and textuality of history. That is Louis Montreux's correct sentence, if you want to remember. General editor of the Norton Shakespeare. अच्छा, आप में से कितने बच्चों के पास Norton Anthology है? It's a question. Norton Anthology. आपको लगता है कभी कभी कि जब मैं आपकी एज का था, आई डिड नॉट हैव दैट मच मनी, बट आई यूज्ड टू इन्वेस्ट ऑन बुक्स, एंड दैट टाइम आई इन्वेस्टेड 15,000 in my Norton anthologies. Now they are cheaper, cheaply available here and there. Norton Anthology. So the Norton Shakespeare, एक और बुक आती है Norton Shakespeare, 2015 में ये बुक आई थी. इनके ये एडिटर है, ओके, जर्नल एडिटर. और Norton Anthology of English Literature, जिसको मैं पढ़ता हूं हमेशा. My knowledge is always based on Norton Anthology. Okay, so Norton Anthology के Stephen Greenblatt is the general editor. They may ask you this question also. Okay, next important book is Marvelous Possessions. Marvelous Possessions, The Wonder of the New World. Subtitle is The Wonder of the New World. Next book, Will in the World. WILL, Will in the World. How Shakespeare Became Shakespeare. It's subtitle. Will in the World. Subtitle is How Shakespeare Became Shakespeare. Okay. Next important essay is Resonance and Wonder. Resonance and Wonder. अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि Resonance and Wonder are the words related to which author? Then some students were asking me, they were exactly eating up my mind, like ये word कहाँ से आ गया? अरे भाई, जब मैं इतने सारे नाम बताता रहता हूँ तो ध्यान से सुना करो. That is a very easy question. Anybody can answer the question if he or she knows that, oh, that is the great essay written by. In this essay is talking about the basic tenets of new historicism. Resonance and Wonder. Okay. अच्छा, अभी मुझे आपका और बताने का मन कर रहा है, पर मेरे गले में बहुत खुजली हो रही खांसी करने के लिए. कल्चरल मटेरियलिज्म मैं आपको कल पढ़ा सकता हूँ, ठीक है. उसके बाद तो फिर आपका एग्जाम ही है, ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट. इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ अब यूट्यूब पे. दोज हु वांट टू वॉच इट अगेन, दे कैन वॉच. थैंक यू वेरी मच.